हाय गाइस, हम लोग गए थे फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो टू कवर द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा था फ्रॉम सितंबर 4 टू 14 इन डाउनटाउन टोरंटो। 50th एनिवर्सरी थी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। यूजुअली टिफ हर साल सितंबर में होता है फॉर 11 डेज। इस बार 4 मेन फिल्म्स प्रीमियर हो रही थी एट टिफ। वन वॉज बॉबी देओल्स बंदर, करण जोहर्स होमबाउंड, हुमा कुरैशीज बयान एंड एक टीवी शो भी प्रीमियर हो रहा था जिसका नाम था गांधी, विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द स्कैम 1992 टीम, हंसल मेहता, प्रतीक गांधी, समीर नायर। और इसमें म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। एंड इस टीवी शो में एक हॉलीवुड स्टार भी है कॉल्ड टॉम फेल्टन, जिसने ड्रैको मैल्फॉय का रोल प्ले किया था इन द हैरी पॉटर मूवी सीरीज। डाउनटाउन टोरंटो में एक फेमस स्ट्रीट है कॉल्ड किंग स्ट्रीट। किंग स्ट्रीट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट स्ट्रीट्स ऑफ डाउनटाउन टोरंटो। इट हैज ऑल द टॉप रेस्टोरेंट्स एंड पब्स। किंग स्ट्रीट पे ही टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल में बेसिकली मूवीज दिखाई जाती है दैट हैव बीन सिलेक्टेड बाय टिफ फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक Q&A क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है बिफोर द मूवी स्टार्ट्स एज वेल एज आफ्टर द मूवी एंड्स। Q&A सेशन में ऑडियंस कैन ऑल्सो आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू द कास्ट मेंबर्स। किंग स्ट्रीट पे बेसिकली 4 मेन थिएटर्स है, रॉय थॉमसन हॉल, रॉयल अलेक्जेंडर थिएटर, प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर एंड टिफ बेल लाइट बॉक्स। बॉलीवुड फिल्म्स हर थिएटर में लगती है सिवाय प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोस्टली बिग हॉलीवुड फिल्म्स ही लगती है। बॉबी देओल्स बंदर मंकी इन अ केज का मूवी प्रीमियर था ऑन September 6 10 PM एट टिफ बेल लाइट बॉक्स। देयर वाज नो पब्लिक रेड कार्पेट फॉर द मूवी। यूजुअली जब पिक्चर रॉय थॉमसन हॉल में लगती है, रॉयल अलेक्जेंडर थिएटर में लगती है, एक पब्लिक रेड कार्पेट होता है, जैसे करण जोहर की होमबाउंड का पब्लिक रेड कार्पेट था विद द फैंस। फिल्म फेस्टिवल में बहुत मज़ा आता है बिकॉज बोथ स्टार्स एंड फैंस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड क्लिक फोटोज। चलो अब आते हैं बंदर की मूवी रिव्यू पे। Hi guys, my name is Akhil and welcome to our channel Every Friday Movie. बंदर बेसिकली टीवी स्टार समा मेहरा की कहानी है प्लेड बाय बॉबी देओल, जिसपे एक फेक रेप केस का चार्ज लग जाता है। ही इज बेसिकली एक्यूज बाय हिज एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री प्लेड बाय सपना पब्बी, जो उस पर फेक रेप केस का चार्ज लगा देती है ओनली बिकॉज ही डजंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद हर एनीमोर। बेसिकली दोनों शुरू में डेट कर रहे होते हैं, बट लेटर द कैरेक्टर ऑफ बॉबी फाइंड्स अ प्रॉब्लमैटिक एंड ही ट्राइज टू अवॉइड अ कंप्लीटली एंड ब्रेक अप विद हर, बट देन द कैरेक्टर ऑफ सपना कैन नॉट टेक द रिजेक्शन एंड शी फाइल्स अ फेक रेप केस अगेंस्ट हिम। मूवी बेसिकली समा मेहरा के स्ट्रगल्स के बारे में है, व्हाट ही फेसेस इन कोर्ट एज वेल एज व्हाट ही फेसेस इन जेल फ्रॉम अदर इनमेट्स। अनुराग कश्यप ने बेसिकली द थीम ऑफ मी टू उठाया है पिक्चर में, वेर इन सम रेयर केसेस ऑफ मी टू द मैन इज नॉट एट फॉल्ट। इस पिक्चर में सिर्फ 3 चीज़ें अच्छी है, बाकी सब एवरेज है। नंबर 1, बॉबी देओल्स इमोशनल सीन्स। एज यूजुअल बॉबी देओल ने मस्त एक्टिंग की है। हिज इमोशनल सीन्स इन द कोर्ट एज वेल एज इन जेल आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यू फील फॉर हिज कैरेक्टर बिकॉज द वे ही हैज एक्टेड, हिज फेशियल एक्सप्रेशंस आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। बॉबी देओल का पहला सीन जो उसकी बेसिकली एंट्री है पिक्चर में, बहुत ही बढ़िया है। आई वॉज सरप्राइज्ड हाउ अनुराग कश्यप गिव हिम सच अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल एंट्री इन द फिल्म. It's so good to see Bobby Deol and his brother back in mainstream movies and shows after almost 15 years. They have been always solid actors, but not sure why for so many years they weren't visible in mainstream movies and shows. Maybe they didn't change with time in terms of choosing the right scripts, or Bollywood just did not use them properly or give them enough substantial opportunities. It is only after Gadar 2 and Animal that both the Deol brothers have blown up again. वरना लास्ट 10-15 ईयर्स में दे वर बेसिकली डूइंग यमला पगला दीवाना एंड अपने जैसी पिक्चर्स ओनली. एक सीन है पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ पे पुलिस क्वेश्चन कर रही होती है बॉबी के कैरेक्टर को ऑन हिज कनेक्शन विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री. बेसिकली उसके प्राइवेट मैसेजेस रीड कर रहे होते हैं उसके सामने. दैट सीन वाज टू फनी एंड क्रेजी. Star actors should not just do a film because of a certain director or because they're getting an opportunity to do a different type of character role. The main reason why a star actor should do a film is because the screenplay is strong. In Bandar, we felt Bobby Deol was just wasted, as the screenplay of the film, which was written by Sudeep Sharma and Abhishek Banerjee, who wrote Patalok 2, just wasn't strong enough. We love watching Bobby Deol's emotional scenes in the film, but कितना देखोगे यार without a strong screenplay. अगर screenplay engaging नहीं है, then you just get tired with the film. And when a star actor gets wasted now, like how it happened with Salman Khan in Tube Light, then they get discouraged only to try different stuff and they go back to the routine commercial stuff itself. The second thing that was good in Bandar was Sapna Pabbi. She absolutely killed it as Gayatri. At the TIFF Q&A, I think it was Bobby Deol or Anurag Kashyap who had said that they couldn't have chosen a better Gayatri, and I couldn't agree more. Sapna Pabbi has excellent screen presence. She emotes vulnerable emotions on screen so well.
There are two scenes of Sapna Pabbi in Bandar which are absolutely brilliant. One scene made me absolutely sick and uncomfortable when I watched it. It was a scene where Gayatri enters Summer Mehra's house and she tries to do the internal decorations of the place. The way that scene is shot, you just feel that the character of Gayatri is just so toxic and horrifying. I mean, I could bloody feel that feeling so well. It was a little scary, but kudos to the director, the actor, the cinematographer, and the background sound composers for making me feel that. The other scene was the meltdown scene of Sapna Pabbi, where she shouts excessively on the phone at Bobby's character. That scene was too good. Sapna Pabbi definitely deserves more roles in Bollywood. Absolutely loved her in the film. One fun fact that was discussed during the TIFF Q&A was that Sapna Pabbi was outright rejected to even audition for the role of Gayatri, as she didn't look the part. So she asked Anurag to let her audition just for the sake of, brushing up her auditioning skills. But when her audition came in, her audition blew everyone apart and she got the role. The third and final thing that was good about Bandar was Anurag Kashyap's direction. Before I talk about Anurag Kashyap's direction in Bandar, I have to say that there's a lot of respect for the guy in terms of where he has come from and where he has reached. He has been directing films since 2003. He always tries to make different types of films and tries to give opportunities to different actors from different backgrounds. Having said that, for the audience, it is only the film that matters at the end of the day, how much they enjoyed it and whether it made them feel something or not. Coming to Bandar, अनुराग कश्यप की फिल्म्स ना हमेशा स्टार्ट बहुत अच्छी होती है, प्रेमाइज भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है, पर फिर पता नहीं बाद में जाके क्यों हमेशा खिचड़ी बन जाती है. Bandar, the concept and theme was a very interesting and important one, but the screenplay doesn't take too much time to become extremely loose. After a while, you just get bored and disinterested while watching the film. When I say this, I'm not trying to be mean, but I'm just sharing my experience. मेरे साथ वाला बंदा ना जो पिक्चर में मेरे साथ बैठा हुआ था वो लिटरली सो गया था पिक्चर में. I mean, I could literally hear him snore, unfortunately. Anurag Kashyap directs well, but the screenplay in Bandar is just not strong enough. During the TIFF Q&A, Bobby Deol and Saba Azad did say that they got dialogues on set, nobody had the entire script, and sometimes the scenes just got changed midway during shooting. This habit of creating dialogues on set or changing scenes midway drastically can either create magic on screen or it can lead to a disaster or an average film. Usually it is always the latter, and it's no different for Bandar, unfortunately. A script with proper dialogues and screenplay already in place before going on set for filming is always a safe and practical bet. Of course, little variations happen here and there in terms of dialogues and scenes, but it's dangerous to change a lot of stuff or not have stuff ready when filming. One thing that I have to mention is that the ending of the film was just too damn weird for me. I thought that the movie would run for 15-20 minutes more with the climax coming, but the movie just suddenly ends and the big screen just starts showing facts and police data about cases happening in India. Picture में climax ही नहीं है. It was such a weird ending. I was surprised producers Nikhil, Dwivedi, Shivi and Gauri Pandit were okay with this. Anurag Kashyap's film Kennedy, that premiered at the 2023 Cannes Film Festival, unfortunately hasn't released in India yet and is neither on any other OTT platform. I hope with Bandar it releases in India as it has such a huge star like Bobby Deol in it. Sanya Malhotra is also in the film. She plays the role of Bobby Deol's sister. एक ही सीन अच्छा है सानिया मल्होत्रा का where she shouts at Bobby Deol when she visits him in jail. बाकी scenes are not so well written for her character. बॉबी देओल के जो जेल सीन्स है सारे जो इनमेट्स है उसमें ऑलमोस्ट 120 of them were theatre actors and they performed brilliantly in the film. One surprise package in the film was Saba Azad. She plays Bobby Deol's new young girlfriend in the film. No matter what impression you might have of her before watching the film, once you come out of the theatre, that impression will definitely change. She has acted extremely well in the film. The cinematography was done by Shaz Rizvi, which was commendable, as it really helped you feel the hostage situation in which Bobby Deol was trapped in. There's only one main song in the film that plays during the jail scenes, nothing extraordinary. Anurag Kashyap has delivered a few good films in the past, like Gangs of Wasipur, Raman Raghav 2.0, Deol, No Smoking, and Man Marzia. But with Bandar, unfortunately, it's a disappointment. We're just going with 3 out of 5 stars. If you liked this video, do show us some love by hitting the like and subscribe button.